चलो कंटिन्यू ना 147 हो गया था 148 रहेगा सो 148 a ray of light traveling along the line x plus y equal to 1 so x plus y equal to 1 इस टाइप का है is incident on x axis after refraction it enters the other side of the x axis by turning p upon 6 from the x axis okay? From the okay fine so क्या टेंसर मीडियम में क्या कुछ बोला नहीं दो पॉसिबिलिटीज है ऐसा टर्न हुआ या फिर ऐसा टर्न हुआ राइट right the equation of the line along which the refracted ray travels is right तो अपने पास में दो लाइंस निकालनी है अपने को सिर्फ और कुछ नहीं है so एक पॉइंट ये तो अपने को पता है इस पॉइंट से पास होने वाला है which is just what 1,0 राइट और अपने को सिर्फ स्लोप ढूंढना है अपने पास में ऑलरेडी स्लोप -1 है और अपने को सिर्फ डेविएट करना है so -1 right so p upon 6 is what हाँ p क्या है और आई थिंक यहाँ पे पाई होना चाहिए था उन लोगों ने p यूज किया उसके पे तो ठीक है so pi upon 6 angle in this case right yeah so -1 is like -45 degrees pi upon 6 is 30 degrees so अगर ऊपर गया 30 then it's just -15 degrees now अगर नीचे गया then it's negative yeah in all cases वो उतना ही बुरा है so yeah so negative 75 degrees and stuff so you just have to do it actually तो tan 15 degree tan 75 degree ढूंढना ही पड़ेगा tan 50 degree यानी कि tan 45 degree minus 30 degree which is like tan of 45 क्या होता है 1 minus tan of 30 degrees is 1 upon square root 3 upon 1 plus 1 upon square root 3 because yeah ये tan रहेगा और 45 degree minus 30 degree so yeah 3 plus 1 4 minus so okay tan okay वो 4 2 minus square root 3 है then that means कि actual में तो slope रहेगा that is that okay got it when y is 0 x is 1 it should work so x y equal to negative of 2 minus square root 3 x इस टाइप का कुछ तो आने वाला था राइट सो y प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3x इक्वल टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट ऐसा रहेगा बट द एक्चुअल थिंग इज लाइक x प्लस y अपॉन माइनस 1 यानी कि एक्चुअली क्या होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट माइनस 1 यानी या सेम काइंड ऑफ थिंग जैसे यहाँ पे प्लस आएगा ये जहाँ पे सो इट्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और फिर 1,0 से पुट करके तुम कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो इज गोइंग टू बी 1 सो दैट मींस यस नो दिस इज नॉट करेक्ट ओके मुझे लगा था कुछ अलग आएगा बट व्हाटएवर और दूसरा ओके ये भी चॉइस बहुत सही नहीं है इट्स जस्ट रबिश व्हाट अबाउट दिस थिंग हाँ तो या दिस एक्चुअली काइंड ऑफ नो यू वांट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ठीक है तो ये वाला इन तीनों में से कोई भी नहीं था दूसरा चॉइस अपने पास में है कि दूसरी चॉइस है इट्स 75 डिग्री गुड थिंग इज वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा दैट मींस कॉट वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल ली है सो एक्स में tan वैल्यू करेगी tan वैल्यू इज जस्ट 1 अपॉन दिस थिंग सो ऑफ कोर्स प्लस समथिंग बट व्हाटएवर so like 1 upon 2 minus square root 3 which is basically just 2 plus square root 3 right so y plus 2 plus square root 3 times x equal to constant इस टाइप के इक्वेशंस मिलने वाले हैं इसको अगर मैं 2 plus square root 3 से डिवाइड करूं so then it's just 2 minus square root 3 y plus x equal to some kind of constant in this case 1 ये 1 आएगा और यहाँ पे 2 plus square root 3 आएगा अब इनमें से कोई ना कोई तो होना चाहिए ना यार let's see 2 minus square root 3 y plus x equal yeah so a is there और क्या है b है क्या नहीं वो माइनस में आ गई और क्या है oh yeah so c is also there so a is there c is there done ये चीज नहीं आएगी ये चीज जस्ट नहीं आएगी क्योंकि अपन ने पहले भी ट्राई किया
So it would have been like this and it didn't work actually. So yeah, कि माइनस स्क्वायर रूट 3 वाला केस सिर्फ यही था. So y plus minus root x equal to c, but then at x equal to 1 it should be like this. No. Okay, let's go to 149. 149 क्या है? Okay. Oh hey, it's just a hyperbola actually. Levels of p. Come on यार, come on. Seriously. तो तुम्हारे कौन से दो पॉइंट है इसमें? -1 2 एक पॉइंट है और 2, -2 एक पॉइंट है, और यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा mod of that, of course that's equal to k. So hey, तुम्हें सिर्फ बताना है कौन सा लोकस है. It's a hyperbola, come on, right? Unless k 0 है, अगर 0 रहा तो फिर ये लाइन हो जाएगी, बट राइट नाउ इट्स hyperbola बिकॉज ये mod में है और फिर k पॉजिटिव ही होना चाहिए. So 149 का c. इनफैक्ट मुझे ऑप्शंस देने चाहिए थे कि k पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे A, C और D. वेट व्हाट नहीं, वेट सेकंड, उन्हें ऑप्शंस नहीं दिए तो क्या आपने कोई अज्यूम करना पड़ेगा कि K तीनों वैल्यूज हो सकते हैं? अगर K नेगेटिव है देन नो लोकस, अगर K 0 है देन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से अच्छा लाइन बोलनी चाहिए डायरेक्टली. टू रेज, हाँ दैट्स मोर लाइक इट, इट्स मच मोर लाइक इट. सो 149 का B हो सकता है, C भी हो सकता है, तो हो ही सकता है, और D भी हो सकता है. सो इन दैट केस राइट, B, C and D. Sure, that makes sense. Yeah, there we go. 149 का B, C, B तीनों. Right, next 150. In triangle ABC, if angle B is equal to secant inverse of 5/4 plus cosec inverse of square root 5, angle C is this. Oh, using a triangle. ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में तो एंगल B दिया है. कम ऑन यार, ये बहुत. secant inverse of 5/4, हाँ, inverse cosine inverse of 4/5 whatever. So सिर्फ इतना बोल रहा था कि cosine of angle B is 4/5. Oh wait, okay, प्लस ये मैंने देखा ही नहीं, cosec inverse of square root 5 भी दिया है यहाँ पे. That's not good. क्या है? It's cosine inverse of 4/5 plus sine inverse of 1/square root 5. Seriously. ठीक है. 25.7 9/13. ये बहुत गंदे वैल्यूज नहीं है. It's not making sense actually. Cot inverse है, tan inverse में कन्वर्ट. सारे ये पॉजिटिव है, एटलीस्ट ये तो भी अच्छा हुआ. एंड C is equal to 3. ओह कम ऑन, तुम्हें दो एंगल्स दिए हैं और तुम्हें एक साइड दी है जो कि ठीक है. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, अभी के लिए भूल जाती है वैल्यूज क्या है, अपन सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करते हैं. तुम्हें ABC ट्राइंगल दिया है, तुम्हें ये एंगल पता है, तुम्हें ये एंगल पता है, और तुम्हें C यानी ये जो साइड लेंथ है वो पता है. तुम क्या क्या निकाल सकते हो? ओके, सो tan A tan B tan C. अब ये तो यार ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का हो गया. डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड. Seriously. Ortho center and centroid, wow, is 5/3. What? क्या टाइप का क्वेश्चन है यार ये, कुछ हो रहा है. कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, और कोई और तरीका नहीं है. So sine inverse of 1/square root 5 you say 1 square root 5. And अपने को tan भी ढूंढना चाहिए कि whatever, या कोई भी वैल्यू में आ गया, फर्क क्या पड़ा. So 1 अपने को कोसाइन ढूंढ लेते हैं. इनफैक्ट let's call this in alpha. Alpha is secant inverse यानी कि cosine inverse of 4/5. So मैं अल्फा के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ. फॉर अल्फा द ट्राइंगल वुड बी 4 5 एंड देन ऑब्वियसली ये चीज 3 हो जाएगी.
सिमिलरली मैं बीटा के लिए ड्रा करूंगा जिसमें या बीटा के लिए क्या cosec inverse of square root 5, right? So square root 5 like that is 1. Then this thing is just 2. Nice. सबसे इजी वैल्यू क्या होगी? tan b ढूंढना, राइट? तो tan ऑफ एंगल b इज जस्ट अल्फा प्लस बीटा का tan, दैट इज so alpha का tan is 3.4 plus 1 upon 2 upon 1 minus of 3 upon 8, right? So this is going to be 6 plus 4 upon 5. So that's just 2 basically. So tan angle B is just 2. Okay, that's nice. Oh yeah, cool. Or alpha plus beta 1 upon square root 5. नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इसको. Well, tan is 1 upon 2. It's less than 45 degree, right? B is less than 45 degree. Similarly, alpha is less than 45 degree. So B angle B भी in fact acute रहेगा. Similarly अपन tan of angle C भी इस टाइप से ढूंढ सकते हैं. So अब बस अपन ये अल्फा बीटा अब इसमें इसी को रीयूज कर रहा हूँ. So अल्फा के लिए क्या बोला है? cosec inverse of 20 sin inverse of 5 plus of 7 upon 25, right? So 7 upon 25, this should be 24. And then 9 upon 13, what? Cosec inverse of, sorry, cot inverse, हाँ. So ये तो अच्छा ही हो गया. 9 upon 13 अपने ऑलरेडी लिख लिया. ये निकालने की जरूरत है. tan of angle C, that's just 13 upon 9 plus 7 upon 24. Yes, it's upon 1 minus 13 into 7 upon 9 over 24, whatever that thing is. So 13 into 24, yeah, ये बहुत लंबा हो रहा है. but करना तो ऐसे पड़ेगा, right? Plus 7 into 9 upon 9 to 24 minus 13. ये तो बहुत यार घटिया सा कुछ भी वैल्यू आएगी. So 18 and क्या कर रहा था मैं? 1836 216, right? I think so. Yeah, 6 cube of course. Minus so 7 and yeah 21 91 like that. So 3 common ले लेते ना. 3 into 13 into what? 13 into 8 plus 7 into 3 upon ये चीज 5 and then it's 12 125. Okay, whatever. 3, let's see, 13 into 8 is 8 and 24, I think. So 104 and then plus 21. What? Oh, that's also 125. Nice, very nice. Gaya. It's just 3. Tan angle C is 3. Huh? Of course, it's possible. पहली बात तो angle C can only go from 0 to pi. So yeah, acute angles. दोनों acute angle है, फिर उनके tan मिल गए, right? Yeah, cool. और फिर अपने को क्या tan angle A ढूंढना भी possible रहेगा, right? Because tan A is just pi minus B minus C. So tan of pi minus something is like negative tan of B plus C, right? So it's negative of 2 plus 3 upon 1 minus 6. So basically 2 plus 3 5 upon 5 as well. So just 1. Tan angle A is 1. Hey, that's nice. So yes, you now know that this is that. So yes, A is correct. Let's go for B, the distance between orthocenter and centroid of triangle ABC. Okay, now how do I find that? Orthocenter and centroid of triangle ABC. Distance between that. But how? How do I do that? No idea, yaar. No idea. Let's go with a big ऐसे मैं coordinate geometry type से solve करूँ, then that would make sense. But so directly इसी तरह से talk है. Sorry. यार ये 1 2 3 ऐसी प्रोग्रेशन का कोई यूज है क्या? इसका कोई यूज है इस चीज का?
don't think so. I don't think it's a yes reason. Uh, okay, A 45 degree है, that's all you know. B और C के बारे में अपन कुछ नहीं जानते इनफैक्ट. एनीथिंग यार, कुछ तो मुझे बताओ कि मैं ये यूज कर सकता हूँ ऐसा कुछ. ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड. अनलेस मैं इसको एक्चुअल में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री थ्रू करूँ, ये सॉल्वेबल नहीं रहेगा इस टाइप से. इस 5/3. वाओ. सी एस. ओह ओके, सी इक्वल टू 3 भी अपने को दिया हुआ है. ट्राई तो कर सकते हैं यार. So, ये 3 है, दिस थिंग इज ए, दिस थिंग इज बी, दिस थिंग इज सी. वी कैन डेफिनेटली फिगर आउट की साइड लेंथ क्या है. वी कैन फिगर आउट एवरीथिंग, यस. बट ये जो रहेगा विदाउट द अदर लाइन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ये तुम कैसे करोगे फिर? इज इट इवन पॉसिबल? नो. Without coordinate geometry, it's not possible to actually find this. So that's our only hope now. Let's do it like this. क्योंकि अपने को एंगल ए पता है, एंगल ए एक अच्छी वैल्यू है एंगल ए की कुछ तो भी. सो दिस थिंग इज 3. यहाँ पे बी रहेगा, दिस इज 45 डिग्री. एंगल बी इज 2 and this thing is whatever that angle is, right? So अपने को ये हाइट समझ गई इनफैक्ट, राइट? ऑर्थो सेंटर ढूंढना इतना मुश्किल रहेगा क्या? एक्चुअली नो, इट्स नॉट दैट हार्ड. अपने को सिर्फ ये लाइंस निकालनी है. ये तो अपने को ऑलरेडी लाइन समझ गई क्या रहेगी, एंड देन तुम्हें सिर्फ ये लाइन निकालनी रहेगी, विच इज इन दैट हार्ड एक्चुअली. अगर तुम बीसी ढूंढ लेते हो तो फिर इट्स डूएबल, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज 45 डिग्री. यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, दिस आल्सो 45 डिग्री. ओके, व्हाटएवर. एंड दिस इज व्हाट 3/2. दिस थिंग इज 3/2, right? Then our b, the point is 3/2, 3/2. जहाँ पे a of course 0,0 मैंने सेट किया. c क्या रहेगा? So अपने को पता है कि एंगल, right? So tan c is 3, then cot c is 1/3. So this will be 1/2, I think. So the c will just be 4, like 2/2 upon 2/2, right? So okay, अपने को b मिल गया, a मिल गया. Got it यार. अपन ये लाइन ढूंढ सकते हैं इनफैक्ट. Yeah. Nice. We can actually find ortho center like that. So of course for the ortho center you just have x equal to 3/2. और दूसरी एक लाइन अपने को ढूंढनी रहेगी, ये वाली. So ये फिर कोई और भी लाइन ढूंढ सकते हैं ना. लाइक ये लाइन तो पता है, it's y equal to 3x, राइट? और अब मुझे सिर्फ इसका अल्टीट्यूड वाली लाइन चाहिए रहेगी. बोलने को इजी है, एक्चुअली में इजी नहीं है. So y minus 3x equal to 0, something like 3y plus x equal to constant, right? Because इसमें स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1/3, इसमें स्लोप 3. So right, और constant अपन इस टाइप से घूम सकते हैं. So y equal to 0 सेट करो, x equal to 2/2, so it's cot v 2/2. तो ये जो लाइन रहेगी, right, 3y plus x equal to 2/2. Cool. That's also nice. अब अपन ढूंढ सकते हैं. Yes. So 3y equal to 2/2 minus x is just 3/2. Well, that's 4 minus 3, I think. So 1/2. So y is 1/3/2. We are done, yeah. Nice. So जो ortho center है h, that's just 3/2 comma what? 1/2. Okay. बढ़िया. और अपने को क्या ढूंढना है? और सेंट्रॉइड तो काफी इजी. सो g is just, इसी को ऐड करो, तो ये 0 है. 3/2 plus 2/2, that's 7/2, I think so. Yeah, so it's going to be 7/3/2, comma. अब इन सबको ऐड करो. वाओ, ये 0 है, बहुत ही अच्छा. So just 1/2 like that. अब क्या आपसे किस बीच का डिस्टेंस ढूंढना है? हाँ, now it's a piece of cake. So 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं. Yes, 1/2 कॉमन निकालो. It's just 3 minus, actually square root डालता हूँ यहाँ पे. Square root of 3 minus 7/2 square of 7/3 square. Plus, oh ये तो 0 हो जाएगा. बढ़िया. Hey, that just means it's like the difference of these two. So 7/3 square root 2 minus 3/2. Hey, why did this happen? इनका y कोऑर्डिनेट सेम कैसे आ गया? ऐसा जनरली होना तो नहीं चाहिए.
खैर जो भी है, जो हुआ सो हुआ. So oh sorry, 3 upon square root 2 बड़ा है ना, right? I mean h is somewhere over here and then g is somewhere over there, so yes, it does make sense. So 9 minus 2 minus 7 2, it's going to be square root 2 upon 3, right? There you go. So no, it's not 5 upon 3, square root 2 upon 3. What was this? इतना मैंने पूरा किया और यार ये क्या छी क्यों आखिर? What was this? Why was this? Whatever. So no, I think D is wrong. Sorry, B is wrong. So ठीक है. Area of triangle ABC is irrational. Look at this. No, it's 4 upon like 2 square root 2 times 3 upon square root 2 and that half. No, it's not irrational. It is rational. So B and C are wrong. Radius of described circle drawn opposite to vertex A is rational. Okay, radius of that. Wait, opposite to vertex A like this thing. Okay. वो radius से ढूंढते हैं वैसे like that thing is semi perimeter and right, this condition will be semi perimeter of minus B. That's this tangent नहीं भूल गए अपने को, तो tangent नहीं ढूंढने यार. याद करो कैसे करते हैं. cot a/2 अगर इसमें यूज होता है, थोड़ा सा वापस इसका डेरिवेशन थोड़ा सा एक बार कर लेता हूँ. यहाँ पे सर्कल आएगा, ये एस टाइप से रहेगा. दिस कंप्लीट थिंग इज जस्ट एस, राइट? एंड whatever what we actually want to figure out is कि ये रेडियस कितना है. well first of all ये चीज तो a/2 होगी ना, and this thing is s, we just know it. Of course, so it's just s. Wait, what? That's 90 degree right there. Yes, actually थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, but you get the idea. It's s tan of a/2. Hey, it wasn't that hard actually. It's just equal to r a. Not that hard actually. Yeah. So right, and semi perimeter अपन कैसे ढूंढेंगे? Now that's a real question. Semi perimeter किस टाइप से ढूंढेंगे अपन? So अपने को ये length पता है. That's all actually that you know. All you know is just a. Sorry, C, right? उस लेंथ से अपने को सेमी पेरीमीटर ढूंढना है. थोड़ा अजीब का क्वेश्चन हो गया नहीं. Okay, BC kind of we can, sure we can, but करना ही पड़ेगा. Square root of let's see 3 upon square root 2 minus this thing, so minus 4 is like 1 upon the square root 2. In fact, in common ले लो, so 1 upon square root 2 common. Yeah, whatever, don't take it common. So 1 upon square root 2 का square, okay, 1 upon square root 2 common, and 1 squared plus in this case 3 squared, so 9 plus 1 10. It's going to be square root 5, I think. So this cheese square root 5 है. This thing is not even. Wait, you know what? I think it. Right. Okay, that would have actually worked. Right. इस टाइप से करो ही मत. वो इतनी तुम्हें लेंस ढूंढने की जरूरत नहीं है. मतलब अपन ढूंढ लिया ऑलरेडी, बट जरूरत नहीं है. You can just say it's like s. So it's just a plus c, right? And oh no, अपने को ढूंढना ही पड़ेगा. It's getting complicated. ठीक है. So this was just square root 5. This thing was 2 square root 2. So the thing is that it's 3 plus square root 5 plus 2 square root 2 upon 2. That's our semi perimeter. And that times tan of a upon 2. अब वो कैसे ढूंढूंगा मैं? Tan of a upon 2. तो tan a पता है. Tan a is just 1. So tan of 40 degree upon 2. So it'll be like 2t upon 1 minus t square. So yeah, that's even more complicated. T square minus 1 equal to -2t. So t square plus 2t
minus 1 equal to 0. So t is minus b minus 2 plus minus square b squared 4 minus, yeah, so it's यार ये क्या है एग्जैक्टली, इतना बुरा क्यों है ये? 8 अपॉन 2, इट्स सीरियसली यार ये क्या हो रहा है? जस्ट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स माइनस तो नहीं चलेगा, सो जस्ट प्लस square root of 2. So square root 2 minus 1, I think that's tan 45 degree upon 2. Right. So ये multiply कर दो square root 2 minus 1 upon whatever. This is the thing. This is our value that we want. So it's not yeah, ये खुद से कुछ बोल रहे हैं अभी लोग. It's not rational and this was not irrational. C and D are just wrong. B is also wrong. Only A was correct. What? Why? Whatever. Let's move on. या फिर मैंने बहुत ऐसी कोई तो मिस्टेक हुई होगी बीच में जिस वजह से ऐसा हो रहा है. Whatever. Next question. 151. If f of x equal to -1 plus mod of x minus 2, okay, and g of x is this thing, f of g of x, okay, ठीक है. Then oh yeah, so at x equal to 0. Okay, पहले g लगाना है, then that means g of x at x equal to 0. Oh god, mod x है इसमें. This is the worst. तो 0 के जस्ट साइडवेज अपने को देखना है, राइट? तो अगर x is less than 0 and it's in the certain range, right? ये 0 माइनस अप्रोच कर रहा है, whatever, उसके पास का है, then you just have g of x is equal to 2 plus x. So 2 plus x and it's close to 0, so like this is close to 2. Yes, yeah, and in fact x is negative, right? So actually it's 2 minus, so it's less than 2. Then that means x minus 2 जो रहेगा that will, hey wait a second, oh f of g में तो already वो negative पे आने वाला है, so anyway it's just f of x is in both cases के लिए it's just -1 plus, so x जहाँ पे तुम ये चीज पुट करो 2 minus mod x, then it's just negative mod x, and that means it's, yeah, it's the same thing as mod x. Yeah, it's mod x. That's it. That's what f of x, f of g of x, sorry. Oops. So it's f of g of x. That's what this thing is. Right. So 2 plus x and 2, sorry, what? No, -1 plus x and -1 negative x. That's what these are. But hey, forget that. mod x पे ऐसा रहता है, बस तुम उसको -1 से शिफ्ट कर दो तो ये इस टाइप से हो जाएगा ना. And yeah, so it's continuous. Yes, it's not differentiable. So D is correct and B is correct. That's all it is. Cool. Next, 152. If there exists a non-zero term independent of x in the expansion, then n can't be. Oh, तो अगर इसमें कांस्टेंट टर्म है तो n क्या नहीं हो सकता? Okay. Whatever. So NCR x power 2 into n minus r, and then all that stuff. So the whole thing is कि x like क्या हो जाएगा ये 2n minus 2r, और यहाँ पे तो नेगेटिव ऐसे आने वाला है, so just -3r anyway, right? This cannot be equal to 0 for r from 0 to n, right? So basically 2n cannot be equal to 5r for 0 से, yeah, so like this. Well, of course r is just 2 upon 5 times n, तो वैसे भी वो n से छोटा है, and yeah, whatever. The thing is that this quantity, it should not be an integer. अगर वो integer रहा then it's possible, and this doesn't make sense, right? Because अपन ने अभी भी कहा कि वो possible नहीं होना चाहिए.
राइट? ऐसी वैल्यू जिसमें ऐसा पॉसिबल ना हो, वो वैल्यूज ओके है। वेट वेट वेट, सॉरी, एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ते। अगर एक कांस्टेंट टर्म मिल रही है देन एन कांट बी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो अगर राइट, तो अपने को ऐसे वैल्यूज चाहिए इसमें कांस्टेंट टर्म मिल रहे हो और वो सारे वैल्यूज इसमें से एलिमिनेट कर डालो। तो ऐसी वैल्यूज जिसमें तुम्हें कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी वो ढूंढना है, मतलब जिसमें आर तुम्हें इंटीजर में नहीं मिल सकता किसी तरह से। सो ठीक है, जिसमें एन 5 के मल्टीपल ना हो, दैट्स इट, राइट? इट कैन नॉट बी 15 बिकॉज अगर 15 रहा देन, सॉरी, हाँ, तो डी डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है बिकॉज 15 में तो तुम्हें मिल रहा है, राइट? तो एंड कैन बी दिस थिंग, दैट्स नॉट करेक्ट। 9 या 12 या 7, या सो ए बी सी। नेक्स्ट 153। 153 is consider a real value function such that f of x is equal to sin x plus 5 to 5. Okay. Okay. बहुत ही गंदा सा डिफरेंस, ओके, इक्वेशन है, whatever. So negative pi by 2 to pi by 2 of sin x plus ये सारी चीज, you know what I'm thinking? It's just f of t is equal to sin x plus, so negative pi by 2 to pi by 2 is pi, right? तो ये तो t में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें x का कोई रोल नहीं है, that's just right, it's just plus pi sin x, right? Of plus integration of negative pi by 2 to pi by 2 whatever, t f of t dt of course. So the whole thing is key f of t is just pi plus 1 sin x plus some constant, जो कि constant of course ये same चीज है, yeah. Then what you can say is like constant is just integration from negative pi by 2 to pi by 2 of t times f of t, अब ये क्या है, ये हो जाएगा, so t times of pi plus 1 sin x plus yeah sin t, sorry, sin t प्लस ये c जो है कोसाइन x लेनी है, सम काइंड ऑफ कांस्टेंट, इसमें k लिखता हूँ इनफैक्ट, या फिर i लिख देता, i अच्छा वेरिएबल i dt, जहाँ पे i ऑब्वियसली कांस्टेंट है। So this just means I equal to pi times, well no, okay, यहाँ पे t है, so it's gonna be I times t squared upon 2 and goes from, वो तो गया यार, तो 0 हो जाएगा, yes, so it's just negative pi by 2 to pi by 2 of pi plus 1 तो कॉमन ले लो, it's just t times of sin t dt. Hey, isn't this an even function, so you can write this as 2 times of pi plus 1 0 to pi upon 2 t sin t dt whatever. Hey, yeah, that's nice, okay. Then what? Of course, just differentiate this thing, integrate this, yeah, ये क्यों 2 pi plus 1, so जिसको इंटीग्रेट करूंगा तो जिसके साइन का नेगेटिव कोसाइन टी हो जाएगा, नेगेटिव कोसाइन टी एंड दैट टाइम्स टी एंड इक्वल्स फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2, वो पहला पार्ट क्या रहेगा, दिस पार्ट इट विल गिव 0 पे 0 हो रहा है, पाई बाय 2 भी 0 ये तो गया इनफैक्ट। जो दूसरा पार्ट रहेगा बचा हुआ, उसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन टी times 1 and equals from 0 to pi upon 2 dt, well this thing is just 1, we know it, so that's it, it's 2 times of pi plus 1, right? So yeah, so now you know, अब अपने को f मिल गया है, राइट? नेक्स्ट अपने को क्या करना है इसका, राइट, if these are the maximum minimum values of function f then, okay, maximum values of function f, maximum value क्या है, it's 3 pi plus 3, minimum value क्या है, it's just pi plus 1, तो oh okay, सिर्फ इतना ही ढूंढना था अपने को, yes it's 3, okay, so a works, what else works, m minus
m is equal to 2 pi plus 1. No, 2 pi plus 2. M plus m is 4 times pi plus 1. Yes, that's correct. So C works. Okay, small m times capital. कहाँ पे चला गया? क्या क्या क्वेश्चन? ये 2 times of pi square plus 1. Wait, what? No, 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 no. It's supposed to be 2 times of pi plus, actually not even 2 times, it's 3 times of pi plus 1 plus square, and this is just rubbish, right? So D is not correct. Next पे जाते हैं 154. If the first 3 terms of an arithmetic progression are the roots of this equation, then the sum of the first 12 terms can be. Seriously यार, ठीक है. So पहले तो तुम मिडिल टर्म निकाल सकते हो. It's just 6 इनका क्या एडिशन है. मिडिल टर्म is 2. Okay, so it's like 2 plus D, 2 minus D. ये तुम्हारी 3 टर्म्स है. Of course इनको तो मल्टीप्लाई कर दो, then it's just 2 times of 4 minus D square. That has to be equal to that has to be equal to this negative of this thing upon 4, right? So negative 18 upon 4, I think. Is this correct though? Yeah, it must be. It must be right. So D square is 4 plus 18 upon 8, or more likely 9 upon 4. 25 upon 4. So D is plus minus 5 upon 2. Hey, you know what? Okay, दोनों चीज़ों में तुम्हें सेम ही 3 वैल्यूज मिलने वाली है. सो जो तीसरा इक्वेशन रहेगा अपना कि उनकी पेयर वाइज सम का उनके पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम वो इक्वल टू 23 अपॉन 4, वो भी हो ही जाएगा अपने सेटिस्फाई. यस, दैट जस्ट मीन्स we found the thing. Okay, cool. So it starts off with 2 minus 5 upon 2 अगर increasing. Okay, it's a problematic thing. Right, तो D क्योंकि अपना अलग अलग हो सकता है, then that means कि अपने sum of first 12 terms it will have 2 values. एक increasing AP रहेगा, एक decreasing AP रहेगा. This is just the worst thing. ठीक है. So let's do it here. क्या कर रहा था मैं? N upon 2 into A plus L, that's all it is, right? Yeah. What the hell? Of course, that's just all it is. N upon 2 into A plus L. So N क्या है इस केस में? N is just 12, so 6 into A plus L. Now that's the kind of complicated thing. ठीक, यहाँ पे A तो है 2 minus 5 upon 2. अब L क्या रहेगा? तो ये पहली टर्म रहेगी. अगर अपन इंक्रीजिंग AP देख रहे हैं, then L will be 2 minus 5 upon 2 plus कितने टर्म्स है? 12, right? So plus 11 times of positive 5 upon 2. That's basically what? 2 minus 5 upon 2 plus 11 5 upon 2. That's 10 5 upon 2. So it's 2 plus 25. It's 27. Nice. Right. This will be our value. और दूसरा केस रहेगा when it's 2 plus 5 by 2 से स्टार्ट हो रहा, फिर वहाँ पे निगेटिव आने वाला है. So just 2 plus 5 upon 2 negative 11 5 upon 2, and that's 2 minus 25, right, which is negative 23. तो ये दो वैल्यूज अपने को देखनी है. ये ट्राई करते हैं. इज 29 into 6 first of all, or you can just see it's like what 6 into, oh so this is actually nice because it's just negative 1 upon 2. So 27 minus 1 upon 2. So yeah, or you can see it's like 20 whatever करते हैं directly. So 6 into 27 is like 18 and 42. 12 क्या कर रहा है? 12 42, it's 162, and then it's negative 1 upon 2, so negative 3. So 159. Okay, B is correct. 154 का B एक possibility है. I'm guessing कि maybe A एक possibility रहेगी.
राइट, क्योंकि ये भी इंटीजर ही होने वाला है। सॉरी, स्टिल जिस पर श्योरिटी कर लेते इसको। सो व्हाट इज दिस? इट्स जस्ट -21 and then it's 6 and whatnot. Wait. अपन ने लास्ट टाइम क्या किया था? It was ये -1/2 था. That's why it was correct. So yeah. Sorry. हमें क्या कैलकुलेट करना है? अभी ये कैलकुलेट करना है. 6 into what? -21. ये सारी चीज. In fact, it's just 4 plus 1/2 anyway. So just -19 plus 1/2, I guess. Right. So -6 and 4. Yeah. Volume 4. This is correct. It has to be correct. Plus 3. So it's -1/1. That is A. So A is correct, B is correct. Next. 155. क्या है यार, कैलकुलेशन हैवी होते हैं क्वेश्चन में. Consider the planes. Okay, these planes, the plane, this plane bisects the angle between the given planes, which is okay. Contains origin obtuse, which contains origin. Okay, so the planes contain. यार ये क्या डबल मीनिंग निकाल रहे हो सेम सेंटेंस का? तो क्या ये प्लेन्स ओरिजिन कंटेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, तो पागलपन है. The angle cannot contain origin. पता नहीं क्या बोल रहे लोग. Is this acute? This plane bisects the given planes which सिर्फ नॉर्मल वेक्टर्स देखो ना कि वैसे भी तुम शिफ्ट करने वाले हो तो फर्क क्या पड़ने वाला है ऐसे, राइट? तो सब कुछ शिफ्ट कर दो अबाउट ओरिजिन एंड दिस वुड जस्ट बी दिस, राइट? सो 3 6, so -6 and 2, and then dot our whatever r vector x y z, that is 0. अगर मैं शिफ्ट करता हूँ अबाउट ओरिजिन जो भी एक पॉइंट, या यू गेट द आइडिया, राइट? तुम प्लेन्स को शिफ्ट भी करते तो भी वो सेम ही ज्योमेट्री रहेगी, राइट? तो एक काम करना, डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर्स की बात करते हैं अपन. सो अपने जो ओरिजिनल नॉर्मल वेक्टर्स इन दो प्लेन्स के थे, 3 -6 and 2, और दूसरा है 4 -12 and 3, राइट? और जो तीसरा जो कट करने वाला प्लेन है, दैट इज 67 -1 62 47. सीरियसली, व्हाट इज दिस? ओह कम ऑन, इसमें सेम चीज भी नहीं है कोई. ये कैसा क्या है ये आपके लिए? आई डोंट नो. ठीक है, तो अगर तुम्हें पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए. इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? √9 + 4 + 36 यानी कि 49 यानी कि 7. सो उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? √16 + 144 + 9 यानी कि √160 + 9 169, which is 13. सो मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? तो या थिंक अबाउट इट. मतलब से दो ऐसे प्लेन्स हैं, उनके जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, अगर वो उनका डॉट प्रोडक्ट एक्यूट रहा, राइट? अगर तुम्हारे प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक्यूट रहा, व्हाट दैट मींस, जो नॉर्मल वेक्टर्स का एडिशन वगैरह है, राइट? वो वाला जो अपने को मिडल नॉर्मल वेक्टर मिलने वाला है, दैट एक्चुअली इज द प्लेन दैट इज कटिंग एक्यूट एंगल, राइट? अच्छा, यहाँ पे क्या डॉट प्रोडक्ट है? ओवर हियर डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट 12 प्लस, हाँ वो पॉजिटिव है ऑफ कोर्स. देन बिकॉज इट्स पॉजिटिव, एंगल एक्यूट है, राइट? व्हाट दैट मींस इज कि या तो इनका जो नॉर्मल वेक्टर्स ऐड करने में जो आपको मिलने वाला है, दैट थिंग इज नॉर्मल टू द प्लेन कटिंग एक्यूट एंगल, राइट? और जो सब्ट्रैक्ट करने मिलेगा, दैट विल बी दैट थिंग. सो इसको देखते हैं क्या हो रहा है. दिस थिंग इज इक्वल टू
9 and negative 18, I think. Sorry, 13, yeah, 39. और ये रहेगा 28. Yeah, I think a positive वाला version है इसका. So 87, 14 is 84, so 84 like that. And 21. इसको ऐड करके देखो, हाँ ये सेम चीज मिल रही है. That means okay, it's cutting the acute angle. So 155 का B. There we go. That's the only thing. So yeah, just next question. 156. Let the function f be defined as f of x equal to mod of sine inverse of x plus cosine inverse of 1 upon x. Which of the following is true? Mod of sine inverse of x plus seriously cosine inverse of 1 upon x. Wait, what? But look, जो domain रहेगी इस function की 1 upon x, it should be. Oh no, this is bad. ठीक है, जो अगर x positive रहा then 1 upon x, that should be bigger than or less than or equal to 1, but that means x has to be less than or equal to 1, or x is already less than or equal to 1. That means x has to be equal to 1. Similarly, negative version के लिए सिर्फ तुम्हें negative 1 मिलेगा in the domain. तो यार इसकी तो domain ही सिर्फ दो values की है. It's injective in its domain. मतलब okay, अगर मैं 1 put करता हूँ then it's just cosine inverse of 1 is 0 and then plus sine inverse of 1 is pi upon 2, so it's just like that. Yes, and अगर मैं negative 1 put करता हूँ then negative, no sorry, it's just pi plus pi upon 2 once again. वो negative pi upon 2 का mod pi upon 2 है. So yes, it's injective in its domain. Is a many one? No. Range of f is a singleton set. No, it's it having two elements. Signum of f of x is equal to 1, where signum denotes the signum function of x. Yeah, well, that's correct. So D is correct and A is correct. A and D. If AI is the area bound by this, what? Mod of x. Right, 4 lines रहेगी kind of like that. Of course. Equal to BI. Wait, what? Oh, so ये जो चीज है ये तुमने shift कर दी about A. But you know area है, फर्क नहीं पड़ रहा. It's just yeah, मतलब ठीक है. You have shifted it about this and ऐसे 4 lines रहेंगे whatever. बट फर्क क्या पड़ रहा है यार, तुम शिफ्ट नहीं भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बेसिकली ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू बी आई जैसा ही हो गया. तो ए आई तो मैं देखूंगा भी नहीं, इनफैक्ट मुझे फर्क ही पड़ रहा है ए आई क्या है. बी आई प्लस 1 इज बी आई अपॉन 2. Oh, so it's like a geometric progression. Okay, whatever. AI is the area bound. ठीक है ना, कर सकते हैं. So mod x plus mod y equal to b. That would be like b over here, b over here. वैसे 4 बार हो जाएगा, right? So half of b square, but 4 times of that. That's just 2b square. So 2b square is our area. What was this? Seriously. So AI is just 2 times of bi square, and then of course you can figure out something about bi. So bi plus 1 equal to bi upon 2, and b1 है. Okay, b1 is 32, right? So it's like obviously b, yeah, 32, that's bad. b1 is just 2 power 5, huh? And then b2 is going to be 2 power of 2 power of 4, and then b3 is 2 power of 3 some चलते जाएगा, right? So bi is 2 power of, well, 1 जब रहता है तो 5 आता है, तो 6 minus 1, and then this is 6 minus 2 and so on. So it's just going to be 6 minus I like that. Cool. So AI is 2 into 2 power 12 minus 2i, which is basically just 2 into 2 की power 13, right? So 2 power 13 and 2 power negative 12. Cool. अपने क्या ढूंढना है?
We want to find a3. So a3 is 2 power of 13 minus 6, right? That's 3 into 2 is 6, which is 2 power 7, which, yes, it's 128. So A is correct. Okay, a3, no, this is wrong. Limit as entrance to infinity of summation of course, of course. Yeah, seriously. So A I अपने को समझ गए ना. So अपने को क्या लिखना है, अपने को समेशन, ठीक है, तो पहले 2 पावर 13 बाहर निकाल दे रहा हूँ, and then it's just the summation of 2 power negative 2i, and it's from I equal to 1. Why I equal to 1? वहां से भी स्टार्ट करते हो. So okay, फिर इसको ऐसे लिखो 2 power 11 and then summation from I equal to 0, because yeah, so मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको चेंज कर दिया क्योंकि इनिशियली तुम्हारा 1.4 आने वाला था, और फिर राइट. सो मैं इसको डायरेक्टली सीरीज में ही लिख रहा हूँ. इट्स जस्ट 1 plus 1/4 plus 1/4 square चलते जाएगा. Now just 2 power 11 and what? 1/4 upon 3/4, just upon 3. So 2 power 11 upon 3, right? Which is this thing. So it's 2 power 10 into 2 power 3 upon... Wait, why is this 2 power 13 right there? No, that's not correct. That can't be correct. It's 2 power 5, 2 power 13, but 2 power 13 अपने already बाहर निकाल लिया है. It's not 1.3. No, that can't be. That just can't be. That's 10, right? No, this is wrong. 1 से start करो ना तुम. Right? तुम 1 से start कर रहे हो, फिर infinity जा रहे हो. So this is just wrong. No way. Yeah. Still, you वापस कर लेते. So pi is just 2 power of 6 minus I, right? Because when you put I equal to 1, you get 2 power 5, so 32, and then so on. So yes, AI is just 2 times upon 6, 2 power 13 minus 2. सही तो है यार, ये गलत है पूरा. C is wrong. Okay, C is wrong. Only A is correct. Shame. Next, 158. Maximum number of regions into which 10 lines can divide up. Right. ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? इस टाइप का अपन ऑलरेडी कर चुके हैं. राइट. तो क्या क्या था इनफैक्ट वो कि तुम इंडक्शन भी अपन ने यूज किया था, आई थिंक, ये करने के लिए, राइट? सो लेट्स गो फॉर वन लाइन. सिर्फ वन लाइन है, देन इट्स गोना बी 2 लाइंस है, देन इट्स गोइंग टू बी 4. सो डिफरेंस इसमें 2 था, फिर 3 लाइंस होने वाली है. Then yeah, so it just keep on going. तो कितने लाइन सेगमेंट थे, राइट? उस टाइप से अपन कर रहे थे. तो सपोज तुम्हारे पास n लाइंस है और एक तुम एक लाइन लेते हो जो कि डिवाइड करते हैं सारे रीजन को, राइट? तो वो एट मैक्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाला है? n एग्जैक्टली, राइट? तो नेक्स्ट लाइन जो रहेगी n+1 वाली, वो n पे इंटरसेक्ट करेगी. तो फिर वो कितने लाइन सेगमेंट्स या फिर रेज क्रिएट कर रहा है? n+1. या तो उसने n+1 जो ओरिजिनल रीजन्स थे उसको स्प्लिट कर दिया 2 में, मतलब कि अब और n+1 रीजन्स क्रिएट हो गए. दैट्स हाउ इट इज. जस्ट हाउ इट इज. सो या, और जब भी 2 रीजन्स के बीच में लाइन ट्रैवल करती है तो वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट छोड़ के जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज. इट्स जस्ट दैट हर सेगमेंट सिर्फ एक ही रीजन में रहेगा. दैट्स हाउ इट्स गोना बी. So yeah, the thing was कि क्या उसको n of number of regions, right? R बोल देते, whatever. R of n+1 is R of n plus already तुम्हारे पास में n lines, like n+1 regions तुम्हारे आ जाएंगे. Cool. So for example, R of 1 is R of 0. 0 पे सिर्फ एक ही रीजन रहता है, and then +1, and then फिर यहाँ पे +2 और so on, right? Of course. So R of n basically is just 0 plus 1 plus 2 till what? Till n. जब तुम लास्ट में n डालने वाले हो, राइट? तो ये फर्स्ट रीजन के लिए, सेकंड रीजन चलते जाएगा. Nice. So this is just n into n+1/2. Hey,
नाइस, इट्स वेरी नाइस. ओके. Oh wait, okay, zero, zero पे zero नहीं है, zero पे one है, right? So n plus one upon two, but plus one actually. Okay, fine. तो ये r of n है. So अपने को चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन. तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स ही है. कम तब रहेगी जब तुम्हारे पास एक कॉन्करेंट या फिर पैरेलल लाइंस आने लगे. In which 10 lines can divide a plane. Yeah, it's just this thing. So it's 10 into 11 upon 2 plus 1, right? So that is 56. So it's going to be B. कोई और इसमें एक्सप्रेशन जो कि सेम चीज दे रहा हूँ. 8p2. 8p2 is like 8 into 7 upon 2, right? No, sorry. No. Yeah, it's like 8 factorial upon 6 factorial, which is just 8 to 7, not 8 to 7 upon 2. 8c2 रहेगा. So 8 to 7 is 56. 56. Hey, it's the same thing. So C also works actually. And then 7p2, you know, with less, I think. So it's 7 into 7 to 6, right? So, no, that doesn't work. Normals at the points P, Q, R of the parabola y squared equal to 4ax are concurrent in a point on the line y equal to 2a. Okay, parabola y squared equal to 4ax. Is a normals at the points, okay, are concurrent on a point. Okay. Y equal to 2a. Wow. उसका y coordinate 2a. That's all you are saying. Chords P, Q, QR, okay. Okay, this parabola touch a fixed. Wait, what? Oh, अच्छा तो उसका locus ढूंढो, right, समझा. So not that bad actually, not that bad. So y equal to 2a. Hey, so अपन ने ये in fact already किया हुआ था, right? अगर h, k पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारे नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कर रहे हो. यहाँ पे अपने को दिया ही नहीं कौन से नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं. सो ओके, वो तो पूरा चला गया. फिर अपने को नॉर्मल 3 डिग्री इक्वेशन करके करना पड़ेगा. नॉट द बेस्ट थिंग, यू नो. ठीक है, करते हैं. सो y इक्वल टू नेगेटिव tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, राइट. अगर वो तीनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एंड ऑफ कोर्स t1 प्लस t2 प्लस t3 is 0, right? Yeah, that's the only good information that you can get from it. So that's problematic. Can you just figure out कि एक्चुअल में. Oh wait, actually नहीं. जो y है आप इतने 2a सेट किया, राइट. इट्स एक्चुअली डुएबल, इट्स वेरी डुएबल. मुझे अभी तक लग रहा था कि ये जो y इक्वल टू 2 है ये सेंटर के लिए, ये सही नहीं है. इट्स कॉन्करेंट ऑन द लाइन. फाइन, देन इट्स वेरी डुएबल. तो 80 क्यूब प्लस 280 actually 2a minus x times t. So x जब h यूज करते हैं, h is the x coordinate of जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, जो कि एक वेरिएबल है for now. Then minus 2a is equal to 0. So that just means कि no t square, then of course summation of t I is 0. And so t1, t2, t3, that is just 2. That's nice. Okay, that's very nice. एनीथिंग एल्स नहीं, अपने सिर्फ 2a माइनस h दिया है, बट उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो h पता नहीं है. ओके, राइट. सो सिर्फ अपने दो इन्फॉर्मेशन करके क्या मिलेगा. सो दिस, अच्छा ये जो कॉर्ड्स है, दीज टच अ फिक्स्ड पैराबोला. टच अ फिक्स्ड पैराबोला. वो टेंजेंशियल पॉइंट्स ऐसा कुछ नहीं होता होगा. ओह, उसमें सिर्फ क्यू आर और, अच्छा जो आर से तुम्हारे जो दो टेंजेंट्स निकलने वाले हैं, राइट. सो ऑफ कोर्स जो आर रहेगा उसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद द पैराबोला, दैट्स जस्ट क्यू पी, राइट. सो आर को लिखता हूँ मैं t1 यूज, इसलिए यूज करते कि t3 यूज करेगा. 83 स्क्वायर, 283
तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा विद वट एवर पैराबोला वी हैव, राइट? या सो वो फिक्स पैराबोला आपको पता नहीं है, बट उसका जो भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, राइट, दैट्स आवर QP, राइट? QP. What is the line QP actually? ये बहुत लंबा होने वाला है. This line, oh, उसका स्लोप तो अपन ऑलरेडी जानते हैं. It's just 2 upon T1 plus T2. That's equal to y minus कोई भी एक पॉइंट ले लो ना, 81 स्क्वायर, सॉरी 281 upon x minus 81 square. Then it's doable. So 2x minus 281 squared is equal to T1 plus T2x. So T1 plus y minus 281 square minus 281 T2. तो ये गया, it is just T1 plus T2 upon 2y equal to x plus, yeah, the same thing as previous, बस यहाँ पे tangent की जगह पे chord type का हो गया, right? This would be our PQ line, right? And then of course अपन इसको change कर सकते हैं, because this thing would just be negative T3 upon 2y equal to x plus, so T1 T2 that would just be 2 upon T3, so 2a upon T3, like that. Yeah. I'm thinking कि थोड़ा इसको और चेंज कर सकते हैं. Yeah. This is like, अगर यहाँ पे a वगैरह भी जोड़ दूँ, then that would make sense. Sure. So negative, wait, T1 T2 T3 क्या था वैसे? That was just negative 2. So okay, fine. ये chord of contact है, and then you just want to guess कि कौन सा पैराबोला रहेगा. तो बहुत अजीब है यार. Still, we'll try to do it. Negative T3 square upon 2y equal to T3x plus 2a, and just T3 doesn't work, so got to have something else. Huh. Multiply by a maybe. Yeah. Oh, okay, this actually does make sense. So just negative 2a, okay, 2a से multiply करो. It's just going to be 8t3 square y equal to 2a t3 x plus 2a. In other words, 2a t3 x plus 8t squared 3, okay, 83 square y, that's equal to negative 2a, something like that. Guess what? अपन इसको 2 से multiply कर सकते हैं, right? So you remember कि अगर अपने पास x y equal to negative a ऐसा एक कर्व है, फॉर यहाँ पे a स्क्वायर होना चाहिए, राइट? बस अपन ने 2a से मल्टीप्लाई किया था यार, यहाँ पे 4a स्क्वायर होना चाहिए था. नेगेटिव 2a स्क्वायर. तो अगर अपने पास में x y इक्वल टू नेगेटिव 2a स्क्वायर ऐसा एक कर्व है, और अपन x नॉट पोल यूज करके पोलर अपने को ढूंढना है, देन हाउ डू यू डू इट? जस्ट डू x नॉट एक्चुअली, yeah, so x naught y upon 2 plus y x naught upon 2 equal to negative 2 square, right? That's how you do it. Isn't that correct? Yeah, I think that's correct. Yeah. Of course. So then that means that this is actually just the polar, and the pole was 80 cube comma 283. 80 cube, 80 square comma 280, right? Then this was our parabola, but this is a hyperbola actually. Wait, what? This can't be. This is hyperbola. But you can say it. No, but it touches a fixed parabola. But this is not a parabola in the first place. ये तो कुछ और ही है. How?
क्या गलत हो रहा है अपना? ओके, एक और दूसरा तरीका भी है ना, एक दूसरा तरीका भी है, सो मे बी वी कैन ट्राई दैट। एंड डाउट वो अपने को एक्चुअली चीज देगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो अपने को एलिप्स दे देगा इस तरह से। नॉट गुड, नॉट गुड। ओके, अब क्या? यार मुझे तो ये दिख रहा है कि जो लोकस वो रहेगा, वॉट एवर। ओके, ऐसा एक कर्व जिसका पोलार ये चीज रहे सच दैट पोल इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, वो तो यही है यार, दैट्स जस्ट इट। डजंट लुक लाइक इट्स अ पैराबोला। ओके वॉट एवर, ठीक है, फिर आज से नेक्स्ट वीडियो, बस ये अजीब है, सोच सॉल्व करना पड़ेगा खुद से पहले। Still 160 एक बार देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज वैलिड, 2 sin inverse of sin of x upon 2 is equal to x. Oh yeah, so first of all sin of x, तो क्या क्या दिया है, मैं अलग अलग रेंजेस दी हुई इसके ऊपर। sin inverse of sin x upon 2 is equal to x. So first of all x should be in negative pi to pi because sin inverse की रेंज वहां से वहां है, so in negative pi to pi ये हो जाएगा ना? Yeah, I mean, of course, that's all you actually have to do. Negative pi to pi में ये सही से हो जाएगा, what's the problem? Right, so x upon 2, इसको इस तरह से लिखो ना, sin inverse of sin of x upon 2 is equal to x upon 2. So x upon 2 has to go from negative pi upon 2 pi upon 2. अगर वो उस रेंज में है then we are done basically, because right, साइन ऑफ दैट थिंग, उसका साइन इनवर्स वापस x अपॉन 2 ही मिलेगा अपने को, राइट, बिकॉज वो ऑलरेडी उसकी रेंज में था, देन इट्स डूएबल। सो या इट्स गॉट टू बी नेगेटिव पाई टू पाई, सो 160 का सी। और क्या? नो, नॉट फॉर ऑल x, दैट्स स्टूपिड, राइट। तुम x इक्वल टू बहुत बड़ी वैल्यू रख दो देन ये काम नहीं करेगा। ओके, नेगेटिव 1 to 1, हाँ ये काम करेगा बिकॉज ये इस रेंज के अंदर है, सो ओके मे बी बी इज ऑल्सो करेक्ट, इन दैट केस सी वुड ऑल्सो बी करेक्ट, सो बी सी टी। आई रियली थिंक कि ये सबसे प्रॉपर चीज़ है जो अपने को सबमिट करनी चाहिए थी, बट वॉट एवर। सो सिर्फ 159 रह गया है क्योंकि वो मुझे कुछ भी अजीब दिख रहा है, या वॉट एवर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।